Hello. So today I'm going to discuss about this BOTD question of the GFG. So the question is that we are given a topological sorting and find of a given directed acyclic graph. So let me explain about what is topological sorting. The topological sorting is that whatever the sorted order of the elements you had obtained, it must follow the same order in which they are connected. Detail take you to the Google, what the Google say about topological sorting. So according to this algorithm, you can see that there is an edge from A to B. Then in topological sorted order, A must appear before B in the topological order. That means if we take the case of this, suppose this is our directed graph which is given to us, then in this case 0 must appear 0 must appear before 1 appear. That means 0 पहले आना चाहिए 1 के, जैसे कि अगर मैं इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का एक एग्जांपल बताऊं तो लिखा है 0 1, तो इस केस में अपन देख सकते हैं 0 जो है वो 1 के पहले आ रहा है. दिस इज फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. So now I am going to explain to the intuition that how we are going to solve this question or how we are going to find the topological sorting of the given graph. So basically here we will be using depth first search algorithm. If you are not aware of depth first search, then no need to worry, I will explain you. According to the depth first search algorithm, what we simply we take one node and we and then after this node, the node which is connected to that node, we call the depth first search for that node. Then from this node again the node which is connected to this node, we call the depth first search for that, and so on and so forth we proceed. And after that, when nobody is there to call the depth first search, then in that case we return. So here the approach will be this. First we are going to call the depth search. First it will call here, then it here, then here, then after that what I will do, then I want to, then here you can see that there is a no text first search we can call. So here we will return. So before returning, what we will do, I will store this 3 element inside this stack. Then after that again I will return. So here again I will store the 2 into this stack. Then here again I will return. Then here I will store 1 into my stack. Then here from 0 I will return to the main function from where this is called. Then here I will store 0. At last what I will do, I will maintain one answer variable and pop one by one element from this stack and store it into this vector. So what we will get? First we will get 0, then we will get 1, then we will get 2, and then we will get 3. As you can clearly see that this is our topological sorting order. As I had explained you that 0 must appear before 1, and you can see here 0 is appearing before 1. So in this way we have solved this question. Let's move to the coding part. I will write the code as well as I will explain you the code and what is happening so that the thing so let's clear all the codes so that done it. So what I can first, as I had explained you, first I will have to maintain one visited array. It will take the count that how many nodes I have visited till now and how sorry we visited. So I initialize it with 0 means none of the nodes is visited right now. Then I will declare stack st. Then I have to declare one answer variable. There I will store my answers. Then after that, as I explained in depth for search, earlier that I am simply going to call the depth for search function for each and every node. So I call the depth search function, but before that I will check whether the particular node is being visited or not. If it is not visited, then only I will call my depth search function which I will not call.
called here my depth first search function. Here I will pass the parameter I, which node I am traversing right now. Then after that I will pass here adjacency matrix. Pass here instead of it, pass here stack. I will also mark the state of that index as 1 since this node I had already visited. मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या करा, ये मान लो ये अपना ग्राफ दिया है. सबसे पहले मैंने क्या करा, डेप्थ पर सर्च कॉल करा, इसके लिए i इक्वल टू 0 इसके लिए कॉल करा. तो इस केस में क्या हो रहा है, इसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स 0 0 से कितने नोड कनेक्टेड है, 1 1 से कितने कनेक्टेड, 1 से और 3 से कितने कनेक्टेड है, सब नहीं. So nothing is connected. तो ये अपना एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जो कि अपने को दिया है इस क्वेश्चन में. सी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसके अंदर ये चीज स्टोर है. इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या आपने लिख दिया इसका डेप्थ पर सर्च फंक्शन. सर्च में क्या करना, सबसे पहले ये करना कि जो पार्टिकुलर नोड पास आया है ऑटो आई थिंक मतलब एक एक वैल्यू यहाँ से पिक करके लेके आएगा इसमें से एडजेसेंसी और नोड में से एडजेसेंसी और नोड, जैसे एडजेसेंसी और नोड है इसका मतलब ये हुआ कि अभी अपने नोड की वैल्यू क्या थी, आगे का केस देखे तो i इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, एडजेसेंसी ऑफ 0, एडजेसेंसी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 है. तो ये क्या कर रहा है, ये एडजेसेंसी ऑफ 0 वाले जो वेक्टर है उसको ट्रैवर्स कर रहा है और एक एक एलिमेंट को पिक करके उस एलिमेंट को आईटी में स्टोर करा रहा है. अब ये आईटी में क्या स्टोर हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट केस, आईटी में भी अपना 1 स्टोर होगा, आईटी में 1 स्टोर हो गया, सो डी स्टोर कर दो. पर उसके पहले आप चेक कर ले भाई वो विजिटेड है कि नहीं, चेक कर दिया विजिटेड ऑफ आईटी. अगर ये फॉल्स है विजिटेड ऑफ आईटी मतलब आगे चलकर विजिटेड नहीं, मान लो विजिटेड नहीं रहेगी 0 रहेगी विजिटेड, और 0 को उल्टा क्या हो जाएगा 1, इसमें 2 विजिटेड ऑफ आईटी को अपन 1 से इनिशियलाइज करें. एंड अपार्ट फ्रॉम some other function called इसमें हमने इमेज वाइज एडजेसेंसीज कंसीडर्ड टेस्ट. ठीक है. अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन स्टैक में कब इंसर्ट करें, जैसे कि आपके यहाँ से क्या करा डीएफएस कॉल करा तो 0 से अपन ने 1 के लिए करा, 1 से 2 के लिए करा, 2 से 3 के लिए, पर 3 के बाद अपन इसको कॉलिंग के बाद आपको रिटर्न यहाँ से देख सकते हो डीएफएस ऑफ 0 को हुआ डीएफएस ऑफ 0 डीएफएस ऑफ 1 से ऊपर हुआ डीएफएस ऑफ, ठीक है, डीएफएस ऑफ 3 से क्या हुआ कुछ भी. इसको 3 के बाद आने के बाद ये फंक्शन क्या होता है, तो डीएफएस एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. तो इस केस में क्या करें, वो जो पर्टिकुलर नोड है उसको अपन स्टैक में इंसर्ट करते हैं. सो एसटी डॉट पुश इसको अपन इंसर्ट कर तो जैसे मान लो डीएफएस को मैंने 0 माना, 0 ने कॉल करा किसको 1, इसको 3 ने क्या करा, 3 ने 3 के पास चेन उसके एडजेसेंसी एड्रेस में कुछ भी नहीं, वो एडजेसेंसी लिस्ट में कुछ भी नहीं, क्या करेगा ये यहाँ से रिटर्न करेगा. ये जो 3 है उसको अपने स्टोर करके स्टैक में, फिर अब तू क्या करेगा, तू को भी वही नहीं है और मतलब फर्दर डीएफएस कॉल करने के लिए क्या करेगा यहाँ से रिटर्न, इससे तो क्या स्टोर कर स्टोर कर 0 को स्टोर, ये अपन इन सबको स्टोर कर. इसको क्या करें, अभी अपना सब चीज स्टोर हो चुका है और सिंपली क्या करें सर आंसर में इसमें करा जब इसलिए कि एसटी डॉट जब तक इसका अपना खाली तब उसको पुशबैक करा देंगे जो भी अपना आंसर है. आंसर क्या है एसटी डॉट कॉम जो भी स्टैक के टॉप जो एलिमेंट को और स्टैक को अपन पॉप कर दें. ठीक है, आई होप ये तो समझ में आया.
पर क्या करें आंसर को रिटर्न कर दें चेक सब तो कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली लेट मी रन इट as you can see that the get submitted successfully. If you are still facing any kind of issue, then you can definitely contact me. The contact comment box. I will definitely reply to your queries. Thank you for watching this channel. If you think that this video is helpful, then don't forget to like, share, and subscribe to the channel.